Hello everyone. So today I'm gonna basically explain longest turbulent Subarray, which is I think LeetCode number 978. Let me go to the problem description. Yeah, LeetCode number 978. So मतलब उसमें है क्या? So we'll be solving this problem using the cadence algorithm. Okay, I mean cadence algorithm kind of some solution. So So let me now explain the problem, what happens in the problem. Let us go to the description. Basically, there's something written here, but shortcut में अगर बोले तो ये बोल सकते हैं कि basically increasing, decreasing, increasing, decreasing, increasing, decreasing और decreasing, increasing, decreasing, increasing ये सीक्वेंस होना चाहिए. ऐसे पैटर्न में जो भी मैक्सिमम लेंथ हमको मिलता है कोई पर्टिकुलर एरे का कोई पर्टिकुलर सब एरे में in the array, then that would be the length of that sub array will be our answer. राइट एंड देन सो मतलब तो ये क्योंकि सब अरे इसमें इन्वॉल्व है तो कैडन लाइक एल्गोरिथम है तो कैडन एल्गोरिथम में क्या होता है बेसिकली फाइंड द सब अरे सम इज मैक्स वैल्यू तो व्हेनेवर हम सब अरे में क्यूमुलेटिव सम करते जाते हैं and then whenever the cumulative sum becomes less than zero then we set it to zero. Obviously there is another caveat that whenever all the sum numbers are negative then this setting to zero won't give the right answer because उस केस में सबसे largest negative number और स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव नंबर विल बी द आंसर. ठीक है तो फिर जब करंट को जीरो है देन वी हैव टू अगेन बेसिकली लूप थ्रू द एरे अगेन एंड देन figure out if all of the elements are negative and if so then return the uh, least or the most highest negative number or the negative number with the least magnitude, right? So ये है मतलब इसमें मैंने cadence एल्गोरिथम पूरा समझाया नहीं है but that is not the goal of the problem. I just wanted to give you कि ये जो solution है which resembles what other solutions so that you can you can form a link in your mind, right? So now let us look at one particular case in which this particular um, of this particular question. So अब ये वाला जो एरे गिवन है इसमें हमारा आंसर क्या होगा? इसमें हमारा जो टर्बुलेंट एरे होगा वो ये वाला एरे होगा which is given in the box, right? एंड वाई इट इज सो क्योंकि देखो इसमें पहले डिक्रीजिंग है फिर इंक्रीजिंग है, राइट? हियर इट्स डिक्रीजिंग देन इट्स इंक्रीजिंग देन इट्स अगेन डिक्रीजिंग देन इज अगेन इंक्रीजिंग. So this is what we want, and then the number of elements which make up this subarray is 5, so our answer would be 5 in this case. So मतलब इसमें एक important चीज है कि either the subarray will start with a decreasing trend or it will start with an increasing trend, right? And based on whether the start of the subarray is negative or positive or is odd or even, we can figure out कि मतलब कि जो मतलब जब हम स्टार्ट करेंगे एल्गोरिदम को तो हमारे पहला ट्रेंड दैट वी शुड लुक फॉर whether it is increasing or decreasing. ठीक है so this statement which I just told you just now would be clear when I basically run through the code and run through my subsequent explanations. So again let us look at this case again. So यहाँ पर क्या है जहाँ पर स्टार्ट हो रहा है उसमें मेरे को एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस मिला है मतलब यहाँ पर जो स्टार्ट है वो i इक्वल टू 1 है मतलब ऑड केस है तो ऑड में डिक्रीजिंग है और जो स्टार्ट होता है वो हमेशा इवन होता है मतलब इवन में इंक्रीजिंग होगी ऑब्वियसली डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग है राइट. तो इवन में हम इंक्रीजिंग होगा अगर ऑड में डिक्रीजिंग है तो एंड स्टार्ट इज एन इवन नंबर सो इट हैज टू बी इंक्रीजिंग, राइट? तो हमको स्टार्ट में जो ट्रेंड है वो इंक्रीजिंग रखना है और हर बेसिकली इटरेशन में वो ट्रेंड को फ्लिप करना है. देन विल गेट तो बेसिकली व्हाट विल हैपन देन अभी अभी देखो अभी ये स्टार्ट करेंगे. स्टार्ट में तो हमको क्या चाहिए इंक्रीजिंग चाहिए जो कि नहीं है तो फिर हम करंट सम को से जीरो सेट कर देंगे बिकॉज वी आर फॉलोइंग दैट कैडेंस एल्गोरिथम पार्ट. आई विल एक्सप्लेन दिस अगेन इन द कोड, राइट? सो हम इसको पहले इसको मतलब जीरो सेट कर देंगे एंड देन विल कम हियर वेल विच सेटिस्फाइज आवर ट्रेंड कि भाई देखो डिक्रीजिंग है क्योंकि आई ऑड है एंड डिक्रीजिंग है एंड देन इवन में फिर इंक्रीजिंग हो गया फिर सेटिस्फाई कर गया फिर लेंथ को हमने दो कर दिया फिर मतलब यहाँ पर लेंथ वन हो गया था यहाँ पर फिर सेटिस्फाई कर रहा है फिर तीन कर दिया लेंथ को फिर चार कर दिया लेंथ को. ठीक है and now what so we have this is a variable which we kind of increment this kind of a counter so that what so we can understand clearly from here कि जो length of the elements होगा वो काउंटर से प्लस वन होगा क्योंकि हम बेसिकली दो एलिमेंट में बीच में कंपेयर कर रहे हैं तो ऐसे चार कंपेरिजन हो गए बट द नंबर इन्वॉल्व विल बी 5 which is if there are comparisons which means if there are x comparisons the number of elements would be x plus 1.
राइट। सो मतलब ऐसा है, तो इसलिए हम हमेशा जो भी हमारा काउंटर होता है उसका प्लस वन कर देते हैं, दैट ऑल अगेन शो इन द कोड। सो ये सिनेरियो है कि इसमें देखा हमने आई ऑड था, यानी स्टार्टिंग में ऑड था, और जो स्टार्ट होता है वो हमेशा इवन होता है, तो हमको उसमें इंक्रीजिंग करना है, ठीक है। स्टार्टिंग में डिक्रीजिंग हो गया था, स्टार्टिंग ऑड था एंड ऑड वाज डिक्रीजिंग, तो एंड देन द स्टार्ट ऑफ द काइंड ऑफ द लूप which loops through all the elements is basically starts from zero, which is an even number, and that has to be increasing, right? And then we flip over after every iteration. Similarly, अगर ऐसा भी array हो सकता है जहां पर जो स्टार्ट इंडेक्स है वो इवन पे है और फिर हमको डिक्रीजिंग मिल रहा है, ठीक है। अगर स्टार्ट इंडेक्स इवन पे है और फिर हमको डिक्रीजिंग मिल रहा है, तो दैट मीन्स फिर हमको स्टार्ट में डिक्रीजिंग करना पड़ेगा, राइट। फिर हमको स्टार्ट में डिक्रीजिंग ट्रेंड करना पड़ेगा। तो मतलब एक्चुअली मतलब एक और अनदर सिंप्लीफाइड वे टू लुक एट इट इज कि इसमें देखो इस एरे में लाइक ऑल द ऑड नंबर्स हैव डिक्रीजिंग, राइट। तो क्योंकि आगे क्योंकि स्टार्ट एक जीरो से स्टार्ट होता है और जो कि इवन नंबर है, तो उसमें हमको इंक्रीजिंग करना पड़ेगा। और सिमिलरली ऐसा हो सकता है जहां पर सारे इवन नंबर पे डिक्रीजिंग हो, और क्योंकि स्टार्ट एरे का जीरो होता है, और फिर उस पे भी हमको सेम डिक्रीजिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा, एंड देन वी फ्लिप आफ्टर एवरी इटरेशन। सो ऑल दिस इज अ वेरी simple explanation, right? And then this will be even more clear when I explain the code. I've written the code using enums, so it becomes extremely readable. I think this is the most readable code that you can find on the internet for this problem, because जनरली लोग आई थिंक वन माइनस वन लेके करते हैं, जिसका आई मीन रीडेबिलिटी, एंड देन दे राइट अ लॉट ऑफ कोड विच इज एक्स्ट्रा, जिसका कोई जरूरत नहीं है, दैट ओनली कंफ्यूजेस somebody who's trying to understand the problem. But I think I have kind of used a very sleek and compact approach of writing the code, and that would be very easily understandable. तो मैंने दो ट्रेंड्स ले लिए इनम में, राइट, विच इज अ डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, ऑब्वियसली देयर आर टू ट्रेंड्स, ठीक है। इसमें इक्वालिटी कहीं भी नहीं है प्रॉब्लम में डिफाइंड, तो हमको एक्स्ट्रा उसका टेंशन नहीं है। देन वी डिफाइंड काइंड ऑफ अ वेक्टर or kind of a list, you can say. Here it's a vector or list which basically has two trends. The first trend is decreasing and the next trend is increasing, ठीक है। इसमें array है, I'm beg my pardon, this is not a vector, it's an array, ठीक है, array of enums, right? So okay, so now there are two possible situations when the start index में हमको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चाहिए, एंड द स्टार्ट इंडेक्स में हमको इंक्रीजिंग चाहिए। तो पहले पहले लूप में जो स्टार्ट इंडेक्स में हमको डिक्रीजिंग मिलेगा, एंड देन दैट इज व्हाट वी फॉलो, राइट। इफ द ट्रेंड इज डिक्रीजिंग, then and then if the current trend is decreasing, we have to make sure that the values are decreasing, then only increase the length, right? And that the correct trend is increasing, we make sure that the value is increasing, and then only we it increase the length, and then we put the length to zero, because of this is a cadence like algorithm and this works. एंड फिर मतलब इस पर्टिकुलर साइन के लिए हम मैक्सिमम कलेक्ट करते हैं, एंड देन अगेन चेक करते हैं कि मैक्सिमम एक्सीड हुआ कि नहीं। अगर एक्सीड हुआ तो उसको रीसेट कर देते हैं, एंड देन करंट वी बेसिकली एवर आफ्टर एवरी इटरेशन वी फ्लिप। सो इफ द करंट इज डिक्रीजिंग वी फ्लिप इट टू इंक्रीजिंग, एंड इफ इट इज इंक्रीजिंग वी फ्लिप इट टू डिक्रीजिंग। So that is what happens here, is a sleek way of writing it. And then for both the kind of for both the trends, right, this should be current trend. I think the better is max length for current trend, or max length for, I mean, this kind of variable could have been named better. But anyways, so for both these loops, in which one loop we start with the decreasing trend for the start index, and the other loop we start with an increasing trend for the start index, both loops में हम देखेंगे कि over both loops which is the highest value, which will be recorded here in the max length. And obviously, as I explained further, we'll be returning length minus one, because our number of elements in the array is number of comparisons plus one, right? That's why we'll be returning max length plus one, right? So I think I explained the problem pretty well. This code is very short and sweet, and it is very easy to understand what's happening from the code. Hope you understood the problem. I see you in the next video. Thank you. Bye.